Wednesday evening, 8 p.m. Indian Standard Time, 31st of March. Hearty welcome to all our brothers and sisters and children across the world. What a pleasure to meet all the youth today. It's indeed a great pleasure. युवा पीढ़ी से ही भविष्य है, युवा पीढ़ी से ही वर्तमान है और युवा पीढ़ी से ही ये संसार है। युवा पीढ़ी क्या चाहती है, युवा पीढ़ी क्या सोचती है, यूथ के जो हमारे बच्चे हैं प्यारे, वो लोग क्या सोचते हैं, उनकी क्या आकांक्षाएं हैं। क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है? ये शिक्षा की प्रणाली में हम पढ़ाए जा रहे हैं, हम उन्हें स्किल्स, एकेडमिक्स एंड करिकुलम एंड सिलेबाई एंड एग्जामिनेशन, एक रूटीन पैटर्न हमने अडॉप्ट किया हुआ है इंडस्ट्रियल इरा का। और उसके अंदर सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट, सब्जेक्ट ही सब्जेक्ट। एक जमाना था कि जब माँ बाप को शर्म आती थी कि हमारा बच्चा कहीं प्राइवेट ट्यूशन लेता है, और आज माँ बाप फक्र महसूस करते हैं कि हमारा बच्चा प्राइवेट कोचिंग ले रहा है, कोटा गया हुआ है, एक्स्ट्रा कोचिंग ले रहा है। तो कहीं ना कहीं तो सिस्टम में कोई गिरावट या कोई बदलाव या कुछ ऐसा आया है। चलिए आइए, आज मार्च के आखिरी दिन हमारे 800 वेबिनार कंप्लीट हो रहे हैं। We started from 25th of March 2020 when the lockdown was declared, और पूरे जर्नी के अंदर हमने टीचर्स को, प्रिंसिपल्स को, डायरेक्टर्स को, ऑनरेबल वाइस चांसलर्स को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, बुद्धिजीवी को, काउंसलर्स को, मोटिवेटर्स को, यूथ को, हर एक को अपने साथ जोड़ा। wherever they are, we got everybody on board with us, and we kept on discussing what exactly is the purpose of education. Why education? Why to take education? What kind of education? For whom education? एजुकेशन हमें जीवन में देती क्या है, और हम एजुकेशन लेते क्यों हैं, और जो एजुकेशन दे रहे हैं, क्या वो एजुकेशन दे रहे हैं जिसकी हमें जरूरत है, जो भविष्य में हमें काम आने वाला है। आइए आज एक नजर डालते हैं, और हम सब लोग इकट्ठे आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। प्लेजर टू हैव ऑल ऑफ यू विद अस। ओ माय गॉड, great evening, and today 1000 rupees award goes to Arumugam Srinivasan ji from Tamil Nadu. Arumugam Srinivasan ji, you are the first person to log in this evening on YouTube channel GS Motivator. Kindly send me your bank details. It's a token of gesture. और मैं हमेशा हंस के कहता हूं, कौन बनेगा करोड़पति का पहला क्वेश्चन भी तो 1000 का ही होता है। उसके बाद संजय गुप्ता जी, यू आर ए ग्रेट सोल फ्रॉम इंदौर, और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं रिवर्स के बारे में, वाटर के बारे में, जल संरक्षण के बारे में। मैं आपका बहुत आभारी हूं, बिकॉज यू आर डूइंग ए ग्रेट जॉब। और हमारे अरुमुगम जी सैनिक स्कूल से जुड़े हुए हैं, और इनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है। जूली सुब्बा मैम हमारे साथ मणिपुर से जुड़ी हैं, इम्फाल से। ग्रेट वेलकम टू हर ऑल्सो। और हमारे बहुत ही प्यारे अवध नारायण दीक्षित जी लखनऊ से जुड़े हैं, लखनऊ की शानो शौकत। वाह, very good. Heartiest congratulations and hearty welcome to all our brothers and sisters and friends, those are joining us। और खासकर जो युवा पीढ़ी है, आज हम वो बातें करने वाले हैं और वो स्लाइड शेयर करने वाले हैं जो आपको कहीं नहीं मिल पाएंगी साधारण तौर पर। आपको बहुत स्ट्रगल करनी पड़ेगी। यू हैव टू पुट इन लॉट ऑफ एफर्ट्स टू रीच ओवर देयर। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट डू टीन्स, जो हमारे यूथ हैं, what do teens think? What are the need of youth? How school education is linked to higher education? Ever have you noticed that the school principals and college principals, they have a cup of tea together? Great. If not, why not? Why not they should sit together and have a cup of tea? Why not there should be a bridge when the children are in 11th and 12th class? That time the principals of the colleges where children are aspiring to go, or the colleges those are working towards pulling these children to their colleges to get admissions, why don't you get across
and start visiting schools. I think we need more synergy between schools and colleges. That is something which is badly needed. संजय गुप्ता जी, आप बहुत ही बहुत ही प्रगतिशील हैं और एनर्जेटिक हैं। आपकी ऊर्जा भी बहुत अच्छी है। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं। तो हमारा टाइटल है व्हाट डज यूथ वांट। एक एक स्लाइड आज शाम की जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा वो अपने आप में रामबाण है, और वो अपने आप में एक एक स्लाइड आपसे बात करेगी। इट विल डिस्कस, it will become vocal, and it will talk to you. What are we doing for youth? How are we doing for youth? Education, what we are giving today, would it hold relevance by the time they will pass out from schools and colleges? If not, then where is the future map? Where is the future curriculum? The skills and competencies which were required a year back are not required now, because tsunami, how tsunami? That is pandemic, the coronavirus. It has changed the total game of education. I will share with all of you how it has changed the total. Education has become totally transparent. Education has become 100% accountable. Now, nobody can play with children and with skills and with whatsoever is to be imparted to children in any way, in any respect. दूसरा, एक सब्जेक्ट पढ़ाया जाता था स्कूल में, कैलकुलस। मैं आज 70 क्रॉस करने के बाद मुझे आज तक समझ नहीं आई कि उस कैलकुलस को मैंने अपनी जिंदगी में यूज कब किया। Why are we teaching so much? We are stuffing. We are stuffing. We are putting so much of, हम बोलते हैं ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो, ये भी सिखा दो। बच्चे की जान मत लो, बच्चे से समझने की कोशिश करो बच्चा क्या चाहता है। Somebody has joined from Meghalaya also. Hearty welcome to Nanlai. It's a great pleasure. And Subha Foundation, thank you very much for joining. And Arun Garg ji, thank you very much for joining. He is a very respectable principal. अरुण गर्ग जी, आप आज अपने स्कूल का नाम लिखिए और अपनी जगह का नाम लिखिए, so that I can announce and I know. Wow, I have got Vipul Khongar ji also. विपुल विपुल खोंगर जी का अपना एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। आज इनके साथ 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग थी, और वो 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग के अंदर इतना मजा आया इनकी टीम के साथ। और जो इनके साथ सुरजीत जी हैं, और जो सुनील जी हैं, और विपुल जी हैं, आपकी गोल्डन ट्रायंगल को बहुत बहुत धन्यवाद। आज की सुबह आप लोगों के साथ गुजरी एंड रूबरू आपके साथ पूरा कार्य हुआ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू, यू हैव डन ए वंडरफुल जॉब। उस वीडियो को जब आप लेकर आएंगे और लोगों के साथ शेयर करेंगे, 1.5 घंटा आज हमने मंथन किया है एजुकेशन का। ओ माय गॉड, एंड वी हैव टेकन 86 स्लाइड्स ओवर देयर एंड डिस्कस्ड एवरीथिंग। सो हमारे चेंबर की तरफ से, from the ICSI, we extend a very hearty welcome to all of you. There's somebody who is joining from Tinsukia, Assam. Oh my God. And there's a Dolly Barua also who is joining. When you talk about Assam, I get back to my young days, because I used to walk from Tinsukia to Chabua, Chabua to Dibrugarh, Dibrugarh to Moran, Moran to Shivsagar, Shivsagar to Jorhat, Jorhat to Kaziranga, Kaziranga to Naugaon, Naugaon to Dispur, Guwahati. That used to be in my army uniform. I used to do lots of walk in that area. You have taken me today to those beautiful places. Sonuji is joining from Mizoram. Aizol, hearty welcome to you as well. God bless you. Pleasure to have you with us. So, on behalf of ICSI, we extend a very warm welcome to all of you. एक एक स्लाइड आज चुन चुन कर है आपके लिए। एंड यूथ, आई एम फॉर यू। यूथ, आई एम विद यू। यूथ, आई लव यू। यू आर अल्टीमेट द फ्यूचर ऑफ द वर्ल्ड। पूरा ब्रह्मांड आपके आसपास है। यू आर द पावर। ओके, लेट्स टॉक अबाउट इट नाउ। Technology is coming like tsunami. Technology we all adopted during pandemic, Corona also.
And there are two things I am showing over here. One is the mobile phone. On the other side, I'm just showing you the social media. Okay, just see the youth. The charger is tied up with both the hands एंड मोबाइल नहीं छूटता, क्योंकि मोबाइल में इतनी इंफॉर्मेशन है. मैं भी तो आपसे मोबाइल, ये देखिए मेरे सामने मोबाइल है, तभी तो आपके नाम पढ़ पा रहा हूं. और ये जो मोबाइल है, इस मोबाइल के ऊपर जहां आपकी डिटेल्स आ रही हैं, इट्स वर्थ रीडिंग एंड वर्थ नोटिसिंग एंड वर्थ गेटिंग इट. आई एम सो वेरी हैप्पी. सो अरुण जी, आपके स्कूल का नाम है गुरु तेग बहादुर कॉलेज फॉर विमेन, लहल खुर्द, लहर गग्गा. ओके. एंड प्रोफेसर रितु गर्ग जी भी हैं. संजीव भारद्वाज जी, आप एयरफोर्स से हैं. आपको भी मेरी बहुत सारी ब्लेसिंग्स. आप बहुत अच्छे इंसान हैं. आपने इस पूरे जीवन के सफर में बहुत साथ दिया है, यहां तक पहुंचने में बहुत साथ दिया है. आप बहुत प्यारे इंसान हैं और बहुत अच्छे इंसान हैं. राइट. Arumugam ji is writing from Tamil Nadu. Youth are the pillars of the nation. Yes, absolutely. Youth are the pillars. And if the pillars are strong, if the foundation is strong, you can have a multi-story being built on that. So, technology, our teenagers and the smartphones, they will remain unstoppable force. They will use the social media, they will use. But how they will use? And how do you help them to use in a constructive way? Now, the social media and the youth. When I talk about youth prefer क्या करते हैं, वो स्नैपचैट पे जाते हैं कि इंस्टाग्राम पे आते हैं? I think they are more on Instagram. If I take the statistics, कुछ लोग फेसबुक भी बहुत ज्यादा यूज करते हैं. यूट्यूब. अभी आपने ब्लॉगर सुना होगा, ब्लॉगर्स. अब जो ब्लॉग लिखते हैं, दे आर क्रिएटिव राइटर्स, दे आर वेरी नाइस पीपल. एंड जब वो ब्लॉग लिखते हैं तो वो प्रभावित करते हैं, इम्प्रेस करते हैं, इम्प्रिंट करते हैं, एंड दे कैरी लॉट ऑफ मैसेज ओवर देयर. सिमिलर वे, the video streaming, our youth are so creative, they are so dynamic, they are so vibrant, they have got so much of knowledge. And the only thing is, हमको सिर्फ एक काम करना है: encourage youth, encourage youth, encourage youth all the time. That is something so important. Yes. Rituji is writing, youth are the backbone of our country. Yes, Rituji, we totally agree. They are the backbone. Arun ji भी आपको support कर रहे हैं. Great. Sports. अब youth की energy को तो strategize करना है. Even if I have got a grandchild, I'm telling you, I cannot match his or her personality. They are so vibrant, they are so creative, and they are so good with the technology. They can flip around and they can show you so many new dimensions. There are so many channels which my fourth standard grandchild, he teaches me and he tells me, look at this, grandpa, here it is. You got to go through, you got to learn this, you got to pick it up. And I'm telling you, sports, it can do wonders. बच्चे स्पोर्ट्स में अगर अपनी एनर्जी को चैनलाइज करेंगे तो दे विल स्पेंड लेस टाइम ऑन द सोशल मीडिया and they would be channelizing their energy in a more productive, constructive, because your health and wellness is very important. And when I talk about your wellness, it's your physical health, your mental health, and your spiritual health. We have to take into consideration all of them. Yes. Info students, thank you very much. And Joba Lakshmi ji, very true. We need encouragement. Yes, we will encourage you. We'll encourage you every evening. Every evening we will have a program at 8 to 8:30. Okay, gaming. Now, gamification is coming in a very big way. My request to the game companies and gaming, designing, manufacturing, and packaging companies, look at the right side. Why are we making games which are for destruction? Why are we making the games which are channelizing the mind of the youth in a non-productive and in a silent, constructive way of the universe? Don't produce destructive games. No, no. As it is, the child psychology has to be strategically channelized. And that's why the teens,
They prefer high energy interaction and life which is like simulation. Because when you show them something which is platonic and which is artificial, you do, yes, mountain climbing. Arunji is writing mountain climbing. Yes, it's very important because your energy will get channelized that way. So that is called soft adventure and hard adventure. और मैं tourism की background से हूँ तो I always say eco tourism, nature tourism, green tourism, mountain tourism, water sports tourism, aero sports tourism, organic tourism, flora and fauna tourism, cuisine tourism, dances tourism, music tourism, costume tourism. Everything is tourism. You can link it up with the life. Yes. Food. Oh no. Oh no. Oh no. Teens, you love pizza, you love burger, yummy, yummy, and you take Coke and you take pizza with that. Oh my God, Pepsi. You do not know how much you're harming yourself. You don't know. आपको जब तक समझ आएगी तब तक बहुत देर हो चुकी होगी. No, 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 no. The food, what you're putting inside your body, your mind, your creativity, your thought process, everything will go slow. You will be lethargic. You will sleep late hours. You'll sleep late. You'll get up late. Your body order will get disturbed. What you put inside your body, there are two things very important. What you put in your mind and what you put in your body. If you control these two things, you can do wonder on this planet. You can do wonders. That is something very important. Dance and music, yes. Our president is based out of ASEAN countries, our chamber president. And whenever I talk to him, he says he goes all 365 days for the morning walk. तो मैं उनसे कई बार पूछता हूं, जब सुबह बारिश होती है तो आप क्या करते हैं? He says, should I tell you? He's 60 plus. He says, I lock my door, I put the full blast music, and I dance. I dance. So, dance and music, ladies and gentlemen, it should be a part of life. Arunji is writing over here, slow food is required. Yes, you should eat less and you should slowly, slowly eat. That is something very important. Reading. अब reading कैसी है? Teenagers, they enjoy Harry Potter, horrifying, and up, the fourth class child, when he sits with me and I'd say, what are you doing? He says, oh, grandpa, I want to see dinosaur. Why? I want to find out what are the varieties of the dinosaur. What I want to tell you is, बच्चे तो बच्चे ही है ना, उनको बहुत प्यार से संभालना पड़ेगा, बहुत ध्यान से संभालना पड़ेगा. That is something very important we have to work out. Then the children are very conscious about the brands. Let me assure you, people those are of my age profile, you will not bother कि आपने कौन से ब्रांड की शर्ट पहनी है, कौन से ब्रांड की ट्राउजर पहनी है, कौन सी कंट्री की है, कौन सी कंपनी है. डजंट मेक ए डिफरेंस एज लॉन्ग एज you can wrap up yourself and you feel nice with the weather prevailing conditions, you're happy. लेकिन जो बच्चे हैं, oh my god, I want Gucci, I want Boss, I want, no, 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 I'm going to take IP phone, I don't want Samsung, no, Adidas, Levi's, Emporia, Channel. I'm going to say, you are mad about the brands. Goggles लेनी है तो Ray-Ban की. Anyway, let's move ahead and something very interesting we will talk about. Now, this is a very important slide and I wish to share with all of you. हम 2021 में हैं. Within 9 years, the India's population, and when I talk about what world is going to be, what the world order is going to be, the average Indian youth would be 29 years or less as compared to 37 years for China and 48 years for Japan. And this provide India with a very big human capital, young, vibrant, energetic, skilled, ready to be launched, because world is a global village now. World population is aging. लोग बहुत सारी जगहों पर ओल्ड हो रहे हैं, आगे बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं,
और उस चीज को मद्देनजर रखते हुए, इंडिया, योर पॉपुलेशन शुड नॉट बी योर प्रॉब्लम, इट शुड बिकम योर असेट. Today's energetic, dynamic, and ambitious youth need to be channelized. The power lies in them. And they say, I have the voice, I have the power, I have the power to do anything on this planet. Yes, 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 you can do it. You should do it. You will do it. You can do it. You must do it. It's necessary. It's a must. You have to do it. Okay. Our vision and mission should be to work towards youth positive engagement. Look at these youth. What should be our strategy? What should be our effort? Our effort should be thinking what a better tomorrow, a better world where all of us we are together. Empowering youth. When we are talking about invest in youth, empower them, educate them, educate them with the desired skills and competencies, and let them not think about employment. मुझे बड़ी शर्म आती है, कोई बच्चा ग्रेजुएट है, मास्टर्स किया हुआ है, और उसके बाद वो पियून के जॉब के लिए जब अप्लाई करता है, ये नहीं है कि पियून का जॉब अच्छा नहीं है, वो इसलिए अप्लाई करता है कि मुझे गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए, मुझे काम ना करना पड़े. यदि आपकी सोच ऐसी होगी तो भारत का भविष्य कैसा होगा, अब खुद सोचिए. जो माँ बाप ये फक्र काम करते हैं ना कि मेरे बच्चे को गवर्नमेंट का जॉब मिल जाए, गवर्नमेंट की नौकरी मिल जाए, किसी तरीके से गवर्नमेंट में घुस जाए, एमएलए को पकड़ेंगे, एमपी को पकड़ेंगे, किसी और को पकड़ेंगे, किसी लीडर को पकड़ेंगे, किसी चेयरमैन को पकड़ेंगे, पर कोशिश करेंगे कि बच्चे को किसी तरीके से गवर्नमेंट में घुसेड़ दें. नो, क्यों भाई? आप बच्चे को मेहनत करवाइए, बच्चे को एफर्ट्स करने दीजिए. वो दिमागी तौर पे मेहनत कर सकता है, फिजिकल मेहनत कर सकता है. बच्चे क्रिएटिव और डायनेमिक हैं, आप उस चीज को आगे लेकर चलिए ना. दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट विच वी हैव टू टेक. नाउ, केयरिंग रिलेशनशिप, बिलोंगिंग. बच्चों को नेचर की भी केयर करनी होगी, अपने आसपास की चीजों की भी केयर करनी होगी, और हमें बच्चों की केयर करनी होगी. कंस्ट्रक्टिव लर्निंग एक्सपीरियंस मैस्टरी. ये जो ब्रेन है ना, लेफ्ट ब्रेन एंड राइट ब्रेन, now you should go subconscious and conscious mind, understanding students mindsets to foster a better learning experience. वो क्या चीज है जो बच्चों को एंजॉयमेंट देती है, वो क्या चीज है जो बच्चों को हेल्प करती है सेल्फ बिलीफ में. बच्चे को लगे यस आई कैन डू इट, I can do it. I can do it. I will do it. Let's develop the leadership qualities. Let them become more independent. Let's give them the skills and the confidence, which is basically working towards their life skills. Good habits, cooperation, decision making, and goal setting all are just wonderful. Thank you very much, Nan Lai. And thank you very much, the BBA Suba, BB Suba Foundation, yes, and Imphal, brilliant thoughts, yes, it is SWASA, great, thank you. Now you should understand, ladies and gentlemen, with the present government setup, from the time they have come in 2014, they have given the priority to your skills. There are 37 sector skill councils in India. We should be proud of it. These 37 sector skill councils are doing wonder. We have already worked with the health sector, wellness sector, entrepreneurship sector, self-employment sector, media and entertainment industry setup. We are working with all of them. They're just wonderful. Get hold of them, get closer to them, be with them, try and pick up the best of the skills, whatsoever you can. Youth and the community services. Ladies and gentlemen, particularly our young boys and girls, whether you're in school or your college or your university, I would like to make an appeal to you. Start working for your community. Start working for your community. Make your place better than others. That is something very important. Youth in India, we need their voice to be encouraged, heard, and accepted. Yes, 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 you can do it. And when I talk about yes, there also we have done the yes program from the chamber. That's called Youth Empowerment Skills. Youth encouraging skills. Yes, they can do it. Yes, they will do it. World is aging.
Lot of countries are having challenges, right? Starting from Japan, Italy, Germany, Finland, Sweden, Bulgaria, Greece, Portugal, and you can see Croatia, and of course, the Channel Islands of UK and many other countries. The world population is aging. So, thereby, ladies and gentlemen, you can well imagine we got to be supporting the entire world, and people and the youth migration will continue. We always say and we wonder, ये बच्चे जा कहाँ रहे हैं, ये बच्चे जाते कहाँ हैं. अब बाहर की कंट्रीज जो हैं वो बच्चों को स्कूल एजुकेशन में भी लेना शुरू हो गई हैं. कैन यू बिलीव दैट कनाडा इज ट्राइंग टू अट्रैक्ट द स्टूडेंट्स फ्रॉम इंडिया राइट फ्रॉम 9th 10th 11th and 12th class, because it's a cash cow. It's a very early age, and parents somehow they want to give. So thereby it's very important. India with the new education policy, lot is to be done, because the implementation of the policy has to be done. And here comes the new education policy. On 29th of July 2020, the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, along with the Honorable Education Minister of India, Dr. Ramesh Pokhriyal Nishank ji, and their entire team in the education ecosystem, they have opened up, and Kasturi Ranganji has done a wonderful job as a chairman of this particular commission. And the new education policy, now if you go to the Ministry of Education, Government of India website, web portal, you can see it over there what exactly is the new education policy. And those 64, 66 pages can be great. And now the budget is being presented every year on 1st of February, and there are 6 pillars of the budget: health and well-being, physical and financial capital, inclusive development for aspirational India. Vertical number 4 is very important for us because it's a human capital. And then comes the pillar number 5, innovation, research and development. And pillar number 6, minimum government and maximum governance. Right. I'm proud of my brother officers, Army, Navy, and Air Force. And I have got Dikshit ji also from Lucknow right over here, who is in this program. Arumugam ji is also right over here. You can see him. I'm proud of these brother officers, Army, Navy, Air Force, and civilians, those who have worked with the Sainik schools. We have done a series of 31 programs. And I'm proud of all these brother officers. They have done such a good job. They have done such a great inputs for this. And our efforts are that on the 1st of February, the new budget, which has been announced by our Honorable Finance Minister of India, Nirmala Sitharamanji, and where she has conveyed that the 100 new Sainik schools will be set up in India in the PPP mode. That means public-private partnership, where the NGOs, the private schools, and the state governments, they will work together. I'm proud of all these brother officers. All of them, they had come in this particular series. And what we have done over here, we have done the deliberations. We are developing the concept paper now. Colonel Inder Mohanji is working on that particular blueprint and concept paper, which we plan to send across to Government of India soon, with the valuable inputs which we have drawn from 31 webinars which we have done only on Sainik schools. Another very important area, ladies and gentlemen, if we want world to do better and world to do the best and our younger generation to be encouraged, we got to empower our women. They play very important role, whether at home, whether in the office, whether in school, colleges, universities. There are more ladies in education ecosystem today world over when you see, and they are having empathy. They are very considerate. They have lot of patience, and they can deliver the curriculum and things much better. They are great support to the humanity, and this world is because of women. They are mother also, they are daughter also, they are wife also, they are grandchildren also, they are daughter-in-law also. Wherever they are world over, they are teachers also. And our vision from the chamber is, हमने अपने चेंबर से हमारे प्रोफेसर सत्येंद्र धीमान जी जो अमेरिका में हैं, and he was president of ICSI earlier, and now he is the patron. He is in the next hierarchy from the president to the patrons. And we have drawn the vision together along with our team and the governing body that we will set up
ई गुरुकुल ज्ञान यज्ञ. ई Gurukul Gyan Yagya. Now, what it is? What exactly is that? On the left hand side, you see the complete technology. We don't want to deprive children from technology at all. No, no. You got to keep pace, time, astronomy, science, physics, chemistry, biology, whatever you want to learn. With that, we will try and work out how can we link it up with our values? How can we link it up with our spiritual journey? विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर. Because the most difficult question in life is to answer is, who am I? Where from I have come? Where do I have to go? When do I have to go? But I have to go. I cannot be permanent over here. This world is temporary, and that we forget. And that's why we start doing something wrong in life. Whenever you will remember that your journey over here is temporary, you will try and serve the humanity. And anybody who will serve the humanity, there is no better service, there is no better, because karma, whatsoever you have done for samaj, for society, for community, for civilization, we should give back something to society. So this is going to be a new e-Gurukul Gyan Yagya. हम किसी बच्चे से कोई पैसा नहीं लेंगे. हम किसी बच्चे से किसी तरीके की कोई फीस नहीं लेंगे. हम किसी बच्चे को अपने पास नहीं बुलाएंगे. वो अपने माता पिता के पास रहें, वो अपने पेरेंट्स के साथ रहें, वो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें. बट एट द सेम टाइम, जैसे आज आप फक्र महसूस करते हैं ना कि हमारा बच्चा एक्स्ट्रा कोचिंग के लिए क्या है, हमारा उसके लिए क्या है, वी विल हैव विद्या से अध्यात्म विद्या की ओर, a beautiful journey of your children, where your children will be more focused, they'll be more positive, no stress, no anxiety, no depression, no negative thoughts, always positive, always thinking for the betterment of the humanity. इसके अंदर हम आपकी जो आहुति चाहते हैं, आपसे इस यज्ञ में जो दान पात्र में चाहते हैं, वो ये चाहते हैं कि शिक्षा, कोई रुपया पैसा किसी से नहीं चाहिए, शिक्षा का दान दीजिए, डिजिटल वे में दीजिए. हमारा चेंबर आपकी वीडियो को शूट करेगा और पूरे संसार के साथ शेयर करेगा. ई गुरुकुल ज्ञान यज्ञ, दैट इज व्हाट वी विल टॉक विद ऑल ऑफ यू. Youth and their tomorrow. What is the journey ahead? The youth is the hope of our future. And that's what we have to understand. And what is on the top of your mind, that also we got to understand. Education got to be linked with the outcome. Education should not be theoretical. Education should be linked with day-to-day life. Education should be practical. Education should be realistic. Education should be startup, stand-up, entrepreneurship, self-employment oriented. That part is very, very important. And of course, it should give you happiness. Ultimately, what's the purpose of everything? Whatsoever we are doing, even if I'm talking to you now, if I'm not happy, how can I deliver the best to all of you? So Sanjay ji, thank you very much. You're writing wonderful. I'm grateful to you. And Eswasa from the Imphal, proud of you. Thank you. Thank you very much. तो आप लोग बहुत अच्छे हैं, आप लोग बहुत बढ़िया हैं, आप ही से बहुत कुछ सीखने को मिलता है. और एक अच्छी चीज है, वो देखिए छोटी सी बच्ची, येलो, अगर देखें उसका येलो टॉप है और ब्लू उसने कुछ नीचे स्कर्ट टाइप पहना हुआ है, जीन्स वगैरह. तो उस बच्चे ने जो पहना हुआ है, वो छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है? गार्डनिंग कर रहा है, ऑर्गेनिक गार्डनिंग कर रहा है. तो तीन चीजें लाइफ में बहुत जरूरी हैं: ऑर्गेनिक थिंकिंग, ऑर्गेनिक लिविंग एंड ऑर्गेनिक कल्टीवेशन. जब आप अच्छा सोचेंगे, अच्छे से रहेंगे, अच्छे विचार करेंगे और शरीर में अच्छा शुद्ध भोजन डालेंगे, तो कोई वजह ही नहीं है कि आपको कोई प्रॉब्लम आए. एंड लेडीज एंड जेंटलमैन, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है. B2B पिछले दिनों में कोरोना से पहले होता था बिजनेस टू बिजनेस. B2B को बोलते थे बिजनेस टू बिजनेस. अभी वापस आ जाइए, थोड़ा पीछे आ जाइए, थोड़ा आस्था चलिए, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए. मैं ये नहीं कह रहा कि ना कीजिए, कीजिए, क्रिएटिव रहिए, डायनेमिक रहिए, वाइब्रेंट रहिए, एक्टिव रहिए, तेज भागिए, बट गेट बैक टू द बेसिक्स ऑफ लाइफ.
B2B इज नो मोर बिजनेस टू बिजनेस. बिजनेस मत सोचिए, अभी बैक टू बेसिक्स में आ जाइए, यू विल बी मोर हैप्पी. लास्ट स्लाइड वी वुड लाइक टू शेयर एंड वी विल लीव. नेपोलियन हिल की एक किताब है, यूट्यूब पर देखिएगा, जब भी आपको समय मिलता है उसको जरूर देखिएगा. ओ साक्षी जी, आप तो आज बहुत लेट ज्वाइन किया है, ये तो लास्ट स्लाइड आ गई, हम प्रोग्राम खत्म करने वाले हैं. थैंक यू वेरी मच, बट स्टिल यू हैव जॉइंड अस, आई एम प्राउड ऑफ यू ऑलवेज. तो वॉट्सएवर, ये नेपोलियन हिल का है, मेरा नहीं है. नेपोलियन हिल कहते हैं वॉट्सएवर ह्यूमन माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव. whatsoever human mind can conceive and believe can achieve. So let's come together, all of us together. कहीं भी विश्व में आप हैं, हमारे साथ जुड़ जाइए, हम सब लोग इकट्ठे हो जाएं. नीचे व्हाट्सएप नंबर भी आपको दिया है, ईमेल आईडी भी दिया है, और आपके पास यूट्यूब चैनल भी है, जीएस मोटिवेटर. आप सोच नहीं सकते, आप जिस विषय की बातचीत करते हैं ना, मैं उसके ऊपर बात करूंगा. सबसे पहले आपकी पढ़ाई लिखाई, उसके बाद आपकी स्किल्स, उसके बाद आपकी वेलनेस, उसके बाद आयुर्वेदा, उसके बाद स्वामी विवेकानंद जी जैसी सोच, लाला लाजपत राय जी जैसा बलिदान, और उसके अलावा विद्या से अध्यात्म विद्या की, और दैट इज श्रीमद् भगवत गीता. और उसके अलावा यस, लाइफ में एंटरटेनमेंट भी चाहिए, मनोरंजन भी चाहिए. संडे को सुबह 11:30 बजे जुड़िए, संडे को सुबह 11:30 बजे जुड़िए, दिल दिया गल्ला, जहां पर फिल्मों की बातचीत भी करेंगे. कैसी फिल्में बननी चाहिए, बच्चे कैसी फिल्में देखें, अच्छी फिल्में कैसे बनेंगी, कौन बनाएगा, कौन इवेल्युएट करेगा, अच्छी गेम्स कैसे बनेंगी, गेमिफिकेशन कैसे होगा. और फिर our Indian diaspora, क्योंकि our chamber is deeply associated with the non-resident Indian. There are a lot of Indians, those have gone abroad. 31 million Indians are abroad, and they are wonderful brothers and sisters. They're doing great job. Don't think that they are enjoying. They're working very hard. They are sweating hard. They are making, they are making India proud. They are bringing India proud. They are wonderful people. सिर्फ उनसे ज्ञान यज्ञ ले लीजिए, उनसे नॉलेज ले लीजिए, उनसे एक्सपर्टीज ले लीजिए, उनसे नेटवर्किंग ले लीजिए, उनसे कुछ सीख लीजिए. किसी से कोई पैसा नहीं चाहिए. नो मनी इज रिक्वायर्ड फ्रॉम एनीबडी, एनीबडी, नो मनी इज रिक्वायर्ड. व्हाट वी वांट, लाइक माइंडेड पीपल. वाटर मैनेजमेंट, अभी संजय गुप्ता जी जैसे यहां पर जुड़े हुए थे, संजय गुप्ता जी के साथ हम लोग एक सीरीज चलाते हैं एवरी फ्राइडे एट 5 PM इन द इवनिंग. आज चित्रा जी भूल गई, कल मैं आपको रात को 8 बजे वो स्लाइड दिखाऊंगा कि पूरे हफ्ते के हमारे क्या प्रोग्राम है. कल रात को 8 बजे आपसे पुनः मुलाकात होगी. हमारे बच्चे बहुत प्यारे हैं, पूरे विश्व के बच्चे बहुत प्यारे हैं. इंडिया हैज टू बिकम पुनः विश्व गुरु. इंडिया हैज टू बिकम आत्मनिर्भर. Indian youth have to do wonders on this planet, and all of us, like brothers and sisters, we have to serve the humanity and all elders. Before we disappear from this planet, let's add value to this universe and repay back over here only whatsoever wisdom and intellectual capital you have got. Share, share, share your knowledge and your expertise. With these words, बहुत बहुत धन्यवाद आपका. नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू. आज सुबह से बहुत सारे प्रोग्राम चल रहे थे, रिकॉर्डिंग्स चल रही थी, और शाम को आपके साथ मुलाकात हुई. कल रात्रि को 8 बजे हमारी फिर मुलाकात होगी. मैं बीच का एक आधे घंटे का समय आपसे लिया करूंगा. आज थोड़ा सा 9 मिनट ज्यादा हो गए, पर कल से 8 से 8:30, आधा घंटा, ओनली हाफ एन आवर ऑफ योर्स. लेकिन आधे घंटे में कल एक नए विषय पर चर्चा करेंगे. और अब आपको चाहे लिंक मिले ना मिले, आप सीधा जीएस मोटिवेटर पर आइए. काइंडली कम एंड जॉइन अस एट जीएस मोटिवेटर. लेट्स शेयर द नॉलेज, लेट्स शेयर द एक्सपर्टीज, लेट्स शेयर व्हाट्सएवर गुड यू हैव गॉट. आप ह्यूमैनिटी के साथ शेयर कीजिए. ममता जी आप भी अभी जुड़े हैं, और गुरिंदर जी भी आप अभी जुड़े हैं. अवध नारायण दीक्षित जी, जस्ट वंडरफुल थिंकिंग. थैंक यू वेरी मच अवध जी. आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत प्रणाम. खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, और कल रात्रि को 8 बजे फिर मुलाकात होगी. तब तक के लिए आपसे अलविदा.
और अनुमति चाहते हैं। जय हिंद। एक अच्छे भारत, एक समृद्ध भारत, एक सक्षम भारत, एक आत्मनिर्भर भारत के सपने को लेकर आज की रात सोएंगे और कल रात